बैठिए सुधीर, बैठ जाइए। आधी जनता बाहर गई, आ जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आई सेंट वन योजना, मैंने भेज दीजिएगा, सबको शेयर कर लीजिएगा, राइट? हाँ, received, please, yeah, please share in your group and read it, because that is on how technology is changing governance. Basically there are Digital India program, right? And there are just so many programs that is said it by someone, sir. Fine, Amber. No, offline. You shared in the offline. There are already, I have shared with Athira, Sakshi, right? Amber. I hope they have shared. If not, then share it. कोई late नहीं हुआ है. So today is December 28th, and we are going to talk about e-governance. हमेशा small लिखा जाता है. Right, after this I'll talk about citizen charter. First, let me talk about what is e-governance basically. Now, if you see the, with the emergence of information and communication technology, there was a more focus on how to access government services, right, through electronically basically. So if you look at the e-governance, basically e-governance means, how, the accessing government through use of information and communication technology. Simply, आइए आ जाइए. We are tightly bonded with the time. When do you have class? 3:40 and 3:45. 3:40, 3:45. 5 मिनट का गैप है. क्या कर लेते हो 5 मिनट में? कुछ सांस से ले पाते होगे, वो सांस भी नहीं ले पाते. लंच का टाइम नहीं मिल पाता. अच्छा, उससे पहले लंच होना चाहिए ना. Since morning 8. 7:30. Yeah, you take a history thing. Yeah, I think yes. 9 to 5 classes होती. ये तो classes होंगी, right? ये तो होगी, right? And only for few months, not all. Starting से होती तो नहीं. अच्छा, ये तो जब क्लास होता है तब ज्वाइन कराना होता है. जैसे जब नए नए ज्वाइन होता है तो 1 क्लास 2 क्लास इंक्रीज होता है. आई थिंक दिस इज हाईएस्ट वन. अब हाँ, ज्यादा ऑफ कोर्स, इफ यू फील सो, ऑफ कोर्स इट इज सो, राइट? बहुत सारा खाना होता है तो दिमाग में लगता है क्या खाऊं क्या न छोड़ूं, राइट? तो वही हालत होती है पढ़ाई का. जब बहुत सारी क्लासेस होता है तो कुछ क्या कुछ नहीं पढ़े. यहाँ से जाने के बाद मेंटली टायर्ड. कब कम होगी क्लासेस? आई डोंट नो. हो जाएगी कुछ. कौन सा खत्म नहीं होने वाला है. गवर्नेंस कुछ दिन में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? अब क्या ऐड होगा? अब एथिक्स तो यू कैन डू लेटर ऑन, इन बाद में करोगे इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? जो चीज जैसे मान लो कि अब गवर्नेंस नहीं करना, छोड़ दो, बाद में ज्वाइन करो, राइट?
just communicate to the management कि हमें ये क्लास नहीं करनी है because I have to save time. Do it later on. ऐसा नहीं कि हर महीने गवर्नेंस, हर महीने तो नहीं, हर 2-3 महीने पे एक बार शुरू हो जाती है. So do it later, right? You see ना, you have to manage your time, right? And we have to cooperate, of course. We have to cooperate with you. Vaishak sir, the only complaint is lunch time. Can't you eat air? That's why he doesn't come. ऐसा करे, तुम ऐसे ही बिजी रहो. You all, let me tell you, you should not complain. Let me tell you, when you join as a bureaucrat, उसके बाद तो बहुत कंप्लेन होगा. मॉर्निंग 9 बजे निकलोगे, रात को बिल्कुल 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अगर किसी मिनिस्टर ने बिठा लिया तो रात को 11 बजे तक भी बैठना पड़ेगा. So are you unpaid now? पैसा मिलेगा बोल रहे हैं, but are you unpaid now? Let me tell you, this payment you are received from your parent is much more value than you will, whatever the value would have been, in the last, in the next, when you will assume the bureaucrat. तो पता है, दो चीज इंसान का फितरत होता है, नेचुरल. वन इज कंप्लेन एंड अदर इज कंपैरिजन. इंसान कभी खुश नहीं रहना चाहता, हमेशा कंप्लेन रहता है, राइट? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. इस ठंड में क्या करें? गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है. इस गर्मी में हम क्या करें? बारिश बहुत हो गई, ओहो बहुत बारिश है, क्या करें? भीग गए, हाँ रास्ते में रुक गए, क्या करें? पहला है कि कंप्लेन. अगर होगा तो भी कंप्लेन करोगे, नहीं होगा तो भी कंप्लेन करोगे. अंबानी से जाके पूछ लो, उसके पास बहुत सारे कंप्लेन होंगे. अरे क्या बताऊं, इस अडानी ने मुझे पीछे कर दिया, राइट? इसको तो मैं ऐसे ऐसे लपेटूंगा, उसके बहुत कंप्लेन होगा, राइट? So complaint and comparison is the two basic human nature that every human does, and there is no problem, right? तो कंप्लेन करिए आराम से, और ये जिंदगी भर ऐसा लगा रहेगा, ठीक है? अभी 4 महीने बाद जब नहीं है तो क्लासेस नहीं है, जब है तो क्लासेस बहुत है, राइट? लिव विथ व्हाटएवर यू हैव. बहुत क्लास है तो क्लास करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स. चलिए, अगर नहीं करना है, those who are not who wants to save time, just ask the management कि I'll do it later on. What's the problem in that? अगर cooperation नहीं होता है, then your complaint is genuine, है ना? बाद में ले लो क्लास अगर नहीं चाहिए किसी को. लंच ब्रेक चाहिए. अच्छा, कितने बजे तक लंच ब्रेक? 1 से 2 क्लास होते हैं आपके? 5 मिनट का गैप. I'll convey your message. At least half an hour there should be gap, at least, right? Half an hour gap, so that you can have your, you can fill your stomach in between, right? हम लोग तो खा लेते, कभी जब मर्जी हो तभी खा लेते हैं, क्या करें? चलो, let's start with e-governance, right? E-governance refers to, इसका क्या मतलब है? refers to the use of information and communication technology to ensure accountability and transparency. Also, also efficiency, effectiveness, participation. You can write also ensure, accountability, transparency. चलो कॉमा दे दो. Effectiveness, all right.
efficiency, right, and so on. The simple meaning is this, the e-governance. अच्छा, ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक, राइट? हाँ, ई फॉर स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक. E-governance refers to use of information and communication technology to ensure accountability, transparency, and effectiveness. In efficiency in government services, government's delivery of services. Right. Look at the World Bank, definition. The World Bank defined e-governance means use of information communication technology like wide, worldwide, wide area network, internet, mobile computing by the government agencies, so that it can transform the entire governance, right, in relation to citizen, in relation to business man, in relation to other stakeholders. For example, if you are a businessman and if you want to apply for a license in the government agency, any department, now you can access the government through electronically, right? That is e-governance. If you are a citizen and if you want some certificate, for example, birth certificate, you can apply certificate, for the birth certificate or any certificate, right? Basically, it is a paperless, right, presenceless, and one more, paperless, presentless, and cashless governance in contemporary India, right? Even you can pay digitally. So you can access government and its services through electronic. You don't need to go physically. You don't need to access government physically, right? So that is a simple meaning of e-governance, right? So, right, according to World Bank, थोड़ा सा हैवीनेस आ जाता है डिफिनेशन में कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है. Yes. Let me tell you, you are using data, any data, but if you cite the source of the data or the source of any definition, that becomes more reliable, right? Legitimate, of course. Your Vaishak University is issuing degree certificate online. I think every university now allowing issuing degree online certificate. DigiLocker, yeah. Right? Very good. So according to World Bank, e-governance denotes use of ICT. I'm writing ICT. ICT means information and communication technology. यहाँ पर ICT. Use of ICT like wide area network, right, portal, website. अरे तो मैंने अपना वर्ड यूज कर दिया, वर्ल्ड बैंक तो कम ही बोला था. एनीवे ठीक है. Denotes use of ITC like worldwide network, portal, website, apps. पोर्टल मतलब नहीं, ये मेरा शब्द है, मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं. वर्ल्ड वाइड, या इंटरनेट, या यूज इंटरनेट and mobile computing by government agencies, so that it can transform government relations,
with citizen, business groups, and other stakeholders. And other stakeholders. So that के बाद अच्छा, so that it can transform government relations with citizen, business groups, civil society group, and other stakeholders. You can use your right word. You can play with the word. Once you know na things, then you can use. Idea जानना है, word के साथ तो आप play करना है आपको, right? Doesn't matter. Business groups and other stakeholders. Now the second ARC, इसको आगे कैसे बनाना है? ये छुप गया ना? आ गया, yeah, right. The second ARC report titled as e-governance the smart way forward. The smart way forward, described four types of e-governance. Model, right? अब ये four types कौन सा है? First is called G2C. G2C means government to citizen. Government to citizen. Right? Second is government to business. G2B. To government to business. Then third is G2G. That is government to government. That means intra-government, that is government to government. And then fourth is G2E. That means government to their employee. To employee. Like salary आ जाना ऐसे अपने आप, डिजिटल पेमेंट, आपको जाना नहीं पड़ रहा है ऑफिस में, राइट? पहले सैलरी कैसे मिलता था? आप ऑफिस में जाओ, वहां पे आपको चेक मिलती थी, राइट? फिर आप चेक जाके जमा करो बैंक में, फिर बैंक आपको वो पेमेंट करेगा, right? Let me talk about, basically if you look at this the e-governance has improved the quality of services, right? E-governance is also referred as a smart governance. What do you mean by smart governance? Smart means S for simple, M for moral, A for accountable, R for responsive, and T for transparent. Is it? लिख लो. देखिए, e-governance is also known as is also known as smart governance. like bold में लिखो, smart governance. As for simple, yani there is no complexity, just you access. And for moral, there is no immorality, A for accountable, R for responsive, and T for transparent.
T for transparent. Now, if you look at e-governance, e-services, there are, as per the Ministry of Electronics and Information Technology, there are more than 3,500 different e-services offered by the various central government department and state government department. There are more than 8,000 portals and websites, right, of the central government ministries and state government, which provide services. Right, कुछ लिखा दो data, right? According to Ministry of Information and in Ministry of Electronic, पहले electronic आएगा, electronic and information technology, इसको बोलते हैं EIT कैपिटल Y, ऐसे लिखते हैं. अगर कहीं पे डिपार्टमेंट लिखा है मिनिस्ट्री के बदले तो फिर डी आ जाता है यहां पर, और कुछ नहीं होता है. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. there are more than 3,500 services provided by the central government and the state government. Right, I'm using the data from the Yojana which I have already given to you. Right, whenever you have time, you can look at it. Right, few एक दो पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर है क्या. Right, एक ही बात को 5 बार घुमाते रहते. Right, so basically, now in addition there are more than 8,000 website, different website, different portal and website through which citizens, business groups, civil society group, society groups, और किसका नाम लोगे, right, and other stakeholders access government. There are more than 8,000 different types of portals and websites through which now if you look at the e-services we get from the government, there are many. I'm writing few, like for example e-hospital. अगर आपको हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना है, you can just you can take it through, आपको जाना नहीं पड़ेगा. Right, for example e-banking, आपको बैंकिंग करना है, you don't need to go to, पर जाना पड़ता है यार. एटीएम थोड़ी दे देगा कोई. कल मैं 8 बजे गया, अरे पोस्ट कहाँ लेके चला जाता है वो बैंक में, आपको पब्लिक बैंक का नहीं पता. मेरे घर पे एटीएम अभी, my ATM is expiring, right? So actually it came from Mumbai, right? SBI मुंबई में है तो मुंबई से ही आता है, right? वो घर से नहीं ले आकर के अपने वहां पर लेके चला गया. और फिर मैं कल गया था 6 बजे यहाँ से जाने के बाद, मैं बोला आज नहीं मिलेगा, सुबह आइए. सुबह 4 बजे बाद नहीं एंटरटेन करते.
एंड पब्लिक जो पब्लिक प्राइवेट तो कर भी देगा, पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है ना वो अपने आप को इतना बड़ा बाबू समझता है, एसबीआई कर देता है. Southern states are very good, the people, because people are good, so they northern states are, people are very, वो ऐसा घी है जो तेरे उंगली से भी नहीं निकलता है, राइट. नॉर्दर्न इंडियंस, लेट मी टेल यू, थोड़ा गर्म करना पड़ता है उसको, ठीक है, फिर अपने आप उल्टी कर देगा, राइट. ई बैंकिंग, देन भीम यूपीआई, भीम, anything that you can write, anything you can write e-services, right? Like digi locker, digi locker. देन एक है, इसका नाम है उमंग. उमंग नाम सुना है? मैंने गड़बड़ ही लिख लिया है अपने उसमें, उमंग, राइट. देन दैट कॉल्ड इनाम. इनाम मींस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नहीं, आईआर आप लोग पढ़ रहे हो, इट्स कॉल्ड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. ए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. अच्छा, उमंग का क्या मतलब है? यस, उमंग मीन्स यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस. यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर, ये होगा या ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस. ये हम लोग इंडियन ना नाम बिगाड़ने में और नाम बनाने में बड़ा, राइट, वी आर वेरी एक्सपर्ट. यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, that is full form of umang. Similarly, you have swayam. Yeah, swayam. Swayam is a website, a portal for online study, right? Ayush Healthcare, My Government, yeah, many. My Government, my Government. कोविन, हाँ कोविन है, वो आपको जानती है, राइट. देयर आर मेनी सर्विसेज. एक नाम है जीवन प्रमाण. जीवन प्रमाण, ये अजीब सा है. जीवन प्रमाण का क्या मतलब हुआ? No, it gives you life certificate that you are alive. Basically, old age people use this certificate for pension. Retired, that is old age people. Retired persons use. बैंक तभी नहीं तो बैंक बोल देगा ये मर गया और सारा पैसा खा जाएगा. डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, अब ये लाइफ सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट इशू करती है, राइट. अगर वो जो रिटायर्ड पर्सन है उसको कितना दुख होगा, देखो मैं जिंदा हूं उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है. हाँ, पंकज त्रिपाठी नहीं, पंकज कपूर, शाहिद कपूर का फादर. ओके, पंकज कपूर, यस. हाँ, स्ट्राइक पे बैठता है, लास्ट में उसका स्टूडेंट मिलता है, ही इज अ जज, और वो उसको फिर पेंशन करता है, रिन्यू करता है. एनीवे, नाउ लुक एट दिस आर द सर्विसेज, राइट. मैंने अभी कम लिखा है, देयर आर मोर देन, राइट. देयर आर फ्यू, देयर आर 8,000 portals through which the citizen, business groups, other stakeholders access the government, right. Now if you look at what e-governance is doing, basically e-governance is empowering citizen. Nahi, it is empowering citizen, business groups and other stakeholders with technology, right, which is transformative, which is affordable and which is sustainable, right. government बोलो बड़ा बड़ा वर्ड है, मैं लिख देता हूं. आई नो यू डोंट नीड टू यूज, अब अगर याद रहे तो कर दे लेना, राइट. ई गवर्नेंस
E-governance empowering citizens, business groups, and other stakeholders with technology. That is transformative, affordable, and sustainable. याद रहे तो याद, यूज करना, नहीं तो भूल जाना, राइट? ये याद कब रहेगा पता है? जब बार बार आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि इसका सस्टेनेबल का क्या मतलब है. That can be sustained, right? Affordable means anyone can do this, right? Transformative means it is changing the relations between government and citizen, right? You don't need to go to office, right? You need to just apply. You need to access the government through electronic mode, right? मोबाइल उठाना है और बिल्कुल ट्रांसफर कर देना. ना होता है ना, पेमेंट ट्रांसफर करो, पैसा डालो, अकाउंट नंबर डालो, तुरंत. और गूगल पे यू यूज ना, गूगल पे, पेटीएम, मेनी थिंग्स, राइट? Now if you look at e-governance is a paperless, personless, right? Basically our Prime Minister has talked about this word. It is paperless, personless, and cashless governance. The Digital India program, has strengthened the e-governance. In India. Right? Now, what is a Digital India program? अगर पूछोगे कि सर ये है क्या Digital India program? Digital India program is a similar meaning, accessing digitally. Everything is accessible digitally. देखो सबको कैसे दिल्ली को access कर रहा है digitally, right? आप see the online. What is this class? Before pandemic, there was no such type of class, right? Only few where this class was. अभी तो summit होता है, World Summit, that is also digitally. Basically, Digital India program was launched in 2015 by India to make things digitally, right? For example, payment, for example, accessing all the branch of government through electronic mode. यहाँ पर जितना हमने ये बात किया है, this all are example of Digital India, right? We live in a virtual world nowadays. Yes, you are right, right? Even we do love in a virtual world, right? होता है कि नहीं? मैरिज भी होते भाई, मैरिज भी होते, राइट? अब इसका मतलब नहीं कि वर्चुअल वर्ल्ड में घुस जाना है. The real world is more beautiful than the virtual world. क्या मुस्कुरा रहे हो? Anyway. Now let me talk about the 4 types of e-governance we talked about: the G2C, G2E, G2B, G2G, and G2E. Now, right, e-governance, there are 4 model: G2C, G2, क्या बताया था? G2B, yeah, G2G, and G2E. Right? What is G2C? G2C means, to refer, creation an interface between government and citizen, which enables citizen to access the government through electronically, simply.
right? It refers to creation of interface, between government and citizen, so that citizen can access government services electronically. It saves times, does it? It saves times, it saves your money, it saves so many things. Energy, fuel, yes, fuel. Huh? Of course, it also protects environment. आपको जाने की जरूरत नहीं, आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो of course, या बस ही नहीं लोगे, जरूरत नहीं है. Right? Now, if you look at what is the primary objective of G2C? To make the government citizen friendly. The primary objective of G2C is to make government citizen friendly, right? And also, efficient and effective. किसी ने word use किया था, efficient and effective, right? Accountability, जो आप word, वो 8 word मैंने आपको explain किया है governance में. Governance का कोई भी question आए, वो 8 word use जरूर अगर करना हो तो कर लेना. Accountability, transparency, effectiveness, inclusion. Now, just I'm giving you one thing. How e-governance ensures inclusion in India? Tell me. मैंने क्वेश्चन दिया, how e-governance ensures inclusion in India? Huh? Accessible to anybody. Electronics, E does not discriminate, machine does not discriminate, but human does, right? So if you look at the e-governance, the electronic access to the government, anyone can do it, right? Irrespective of the identity, man, woman, SC, ST, anyone, right? So it ensures inclusion, right? It does not ensure exclusion, but if you look at the great digital divide in India, isn't it? Will come later on. पहले तो उसमें नहीं ले जाना आपको. पहले तो आपको दिखाना है कि क्या अच्छाई है, फिर बुराई बाद में, right? Now let me talk about, so if you see the primary objective of government is friendly and city, for example, online registration, right? Or online record, हमें कर रहा था. Yes, do you know योजना का archive है. You can access योजना even of the last 10 decade. अब 1990 से 2000 के बीच में कौन सा योजना का अगर आपको चाहिए मिल जाएगा. It is accessible. वहीं से डाउनलोड करके मैंने दिया है, आर्काइव से ही, right? But in the eye of Mamta Didi and Rahul Gandhi, machine does discriminate. Is it so? Because you put aloo and they will give you sona. EVM. No, see, a machine does not discriminate, but machine can be manipulated. This is the acquisition. And of course, false acquisition. Amber. Anyway. Now, let me give you a few more examples. Right? For example, if you see the Lokwani project in UP,
लोकवाणी प्रोजेक्ट इन यूपी, राइट। अब लोकवाणी प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सिंगल विंडो टू सिटीजन फॉर लैंड रिकॉर्ड एंड टू एसेस एसेंशियल सर्विसेज, दैट इज लोकवाणी प्रोजेक्ट, राइट। बेसिकली दिस इज ई लैंड रिकॉर्ड फाइल, या ई लैंड रिकॉर्ड फाइल। अब तो हर प्रॉपर्टी को ई करना पड़ेगा, राइट राइट राइट। Even your land, your possession, everything you have to put electronically. Sorry, ई पानी, अच्छा पानी बोलते, अच्छा अच्छा। Then you know, for example, locker system, locker system. Then you know, digital locker, yeah, project Friends in Kerala. Have you heard of this project Friends in Kerala? This, actually, under this project, at least 36 lakh people are accessing, you know, connecting with the government, right? अच्छा, Friends का पूरा full form है यहाँ पर, FRIENDS। F मतलब है Friends का, F मतलब fast, R means reliable, yeah, reliable. I for called instant, E for effective, efficient, N for network, आदमी पागल ही हो जाएगा इतना याद करके, D for disbursement, डिसबर्समेंट होता है पैसे को एलोकेट कर देना हर जगह, नहीं, डिसबर्समेंट होता है पैसा जब आप मान लीजिए कि आपने कुछ सामान लिया, आपने पैसे खर्च कर दिया, वो आपको पेमेंट मिल जाएगा दोबारा, दैट इज कॉल्ड डिसबर्समेंट। एंड एस कॉल्ड सर्विसेज, दैट इज फ्रेंड्स प्रोजेक्ट इन केरला। ई लैंड रिकॉर्ड फाइल इज अंडर लोकवाणी प्रोजेक्ट, यस यस हर्ष। लोकवाणी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश इज बेसिकली ई लैंड रिकॉर्ड फाइल, right? If you see the Kerala, all panchayats are, you know, connected with computer. All panchayats, all collectorate in Kerala are connected with, you know, computer, E, electronically connected. That is, you know, the few example of G2C. Now, citizen can access the government and any agency through electronically. समझ में आया? यही मतलब है G2C का. Now come to the G2B. अब G2B का मतलब भी पता चल गया होगा. Refers to creation of interface between government and business group. It refers to creation of interface between government and business group. Business group. हो गड़बड़ हो गया ये. G2B. G2B. राइट? सुबह से पढ़ाते पढ़ाते शाम तक मेरा भी नियंत्रण होता है. राइट? G2B. Yeah, what do you mean by this? It refers to creation of interface between government and business group. You know, and what does it do basically? It saves time of the government and also of the business group. नहीं तो सरकार के चक्कर लगाते, ऑफिस के चक्कर लगा के परेशान है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपने कुछ इन्वेंट किया है, राइट? सो पेटेंट कैसे, यू नो, यू कैन अप्लाई फॉर सम पेटेंट राइट?
approval of patent, right? कौन सा? Yeah, IPR, intellectual property rights. Yes. Payment of all kinds of bill. Payment of all kinds of bill. Right? Then, certificate, yeah, any license, tax filing, yes, ITR, return. Right? E-license. Right? Anyone can apply for the license and get it. Like जैसे हमको DL के लिए जाना नहीं है, अप्लाई करना है, और जिस दिन आपको फोटो खींचना है उस दिन जाना है. Sorry, सारथी, yeah, and also called परिवहन. परिवहन एक करके है, right? You can apply for your driving license, right? And you can preserve your driving license, RC, everything over there. Like GST portal, yes, you are there are GST portal, बहुत सारे हैं, right? GST portal, yeah, right? इसको बोलते हैं ना GSTN. It's called GSTN, right? Then there are, have you heard about Swift initiative? स्विफ्ट ये वर्ल्ड वाला नहीं, वर्ल्ड वाला देख, एक वर्ल्ड लेवल पे स्विफ्ट चल रहा है, कंट्रोवर्सी अगर सुना होगा तो, राइट? ये है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. Single window, actually Swift is used by industrialists, I think, business groups. Single window interface for trade. देखो ना, ट्रेड के लिए लिखा हुआ है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. देयर इज अ स्विफ्ट एट इंटरनेशनल आल्सो, राइट? अगर यूक्रेन अगर पढ़ लिया होगा यूक्रेन रशिया वॉर में, और व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द वेस्ट against Russia, there's also the Western group ejected or thrown out Russia from the SWIFT. अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इसी के थ्रू होता है, स्विफ्ट के थ्रू. अच्छा, स्विफ्ट का सेंटर कहां पे है इंटरनेशनल लेवल पे? बेल्जियम, राइट? तो हम आईआर नहीं पढ़ा रहे, आपको यहां पढ़ा रहे, राइट? गवर्नेंस, राइट? सो स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड, दैट इज कॉल्ड G2C. नाउ कम टू G2G. अच्छा, ये समझ में आया? G2B कुछ नहीं है, G2C जैसे है जैसे G2B है, राइट? नाउ कम टू द G2G. G2G सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर है, G2G. Now what does it mean? Basically it denotes or it refers to creation of a e-tool or e-portal or interface between government and government, right? Simply it refers to creation of interface. अच्छा, इंटरफेस मतलब होता पोर्टल, हाँ, जो भी पोर्टल होता है आप एक्सेस करते हैं. A creation of portal between government and government. इसका यही मतलब होता है, right? There is one project in Karnataka called Khajane project. What is that project? Basically there is an entire treasury department are computerized, right? So one department can access the other department electronically. The entire panchayat system in Kerala is computerized. The entire magistrate, the collectorate in Kerala is computerized. So one department can access the other department through electronically. That is called G2G. Got the idea? वहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन मांगना है, right? In the northeastern state there is called northeastern gang information system, right? What does it? Basically it is a portal and which talks about a street gang, because if you look at the gang has their interlinkages,
within the state, in the few state. अगर आप लेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में गैंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड, पंजाब में वही गैंग दिल्ली में भी एक्टिव है, उन्हीं का कनेक्शन, उन्हीं का ग्रुप, वो भी हरियाणा में भी एक्टिव है, राजस्थान में भी एक्टिव है. अभी जो मूसेवाला मरा है, राइट, सो मूसेवाला का जो कन्विक्ट है, मतलब जो कल्प्रिट है, वो कहां पे पाया गया है? ही इज इन कनाडा, राइट, हिज लिंक इज इन कनाडा, but his group is active in northern part of India, right? Haryana, Punjab, Rajasthan, Western UP, right? So these are the, now you can write, for example, khazane, yeah. Project in Karnataka, right? In which, through which, not in which, through which the Treasury Department of Karnataka, the entire Treasury Department of Karnataka is computerized. Right, you can write the panchayat system in Kerala. The panchayat system in Kerala is fully computerized. Panchayat system and collectorate rate system is fully computerized. Right? Then Northeastern Gang Information System. Northeastern Gang Information System. Gang information. System. Basically, it is a system, it is a portal through which Assam police can access to the Mizoram police, or Mizoram police can access to the the Arunachal Pradesh police, right, or Meghalaya police. Got the idea? This is something. So G2G, now second है ये, third है ये. सही में मैं, there are, yes, different department. Yeah. For example, if you look at the several ministries are ministries are fully computerized, right? One ministers can access electronically other ministries, right? Now come to the G2E. G2E, what does it mean? It refers to creation of interface between government and their employees. Right? हर जगह यूज होता है. क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं. हाँ, ऐप है, क्यों नहीं आराम से कर सकते. अभी हमने कुछ एफआईआर करा था, तो वो 10 बार उसने रिजेक्ट कर दिया. 11वां बार वो उसमें भी टेक्निक है कि you cannot file FIR if your mobile is snatched, right? So you have to file FIR as a lost. I have lost my mobile. You cannot file कि someone has stolen my mobile. Let me tell you, if FIR is registered, the police has to act on it, right? तो पुलिस को एक्ट करना नहीं होता है,
रजिस्टर नहीं करते एफआईआर, उनको लॉस्ट दिखा दो तो रजिस्टर कर लेंगे, हाँ आपका लॉस्ट हो गया है, आप अपना सर्टिफिकेट रखो, कभी कुछ दिक्कत हुआ, राइट। एफआईआर फाइल ही नहीं करते, हाँ मोबाइल वोबाइल पे नहीं करते, नहीं करते, जब तक करना चाहिए ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट इतनी पुलिस कहाँ है, और पुलिस को भी पता है, पता है हर एरिया के पुलिस को पता है कि कौन यहाँ पर चोर है, राइट, और उनका कितने मोबाइल छीनता है दिन में, उसका शेयर उसके पास आ जाता है। सॉरी, हाँ मैं ऑफ कोर्स हाँ, देन वो पेपर दिखा सकते हो लॉस्ट का, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माय मोबाइल। मैं बता रहा हूँ, you know, my better half mobile was snatched in some area. She went actually to file an FIR was not registered. Then I went and I saw कि अगर कोई CCTV कैमरा है कि नहीं. I requested that person, I entered that person home and requested for CCTV clips. I took the CCTV clips and then went to the police station. Let me tell you, police did not register FIR. They said कि आप उस पे कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए. Online I tried several times as a stolen, it did not, then lost. I registered FIR as a lost, it accepted. I given the, and even the सकल सारा सकल सूरत जो उसका बाइक है उसका सब कुछ आ रहा है, पुलिस को दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. हाँ उसको बोला सर थोड़ी मिलता है, वो एक बार भाग गया लेके भाग गया. तो पुलिस को पता होता है कि कौन लिया है, अदरवाइज पुलिस पता करना चाहे तो 1 घंटे में उसका काम 1 घंटे का है, कमीशन आता है पक्का. यार उनको भी तो घर चलाना है, बताओ इतनी सी सैलरी दोगे. और नाउ कैपिटलिज्म हैज प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन. एक मोबाइल आता है 50,000 रुपए का, तो कहां से खरीदेगा बताओ. उसका बच्चा मांगेगा पापा मुझे वो नहीं डुकैती चाहिए, दुकाती नहीं दुकाती बोलते ना, राइट, तो कहां से देगा बताओ. या बुलेट भी मांगेगा, बुलेट भी आजकल कितने का आता है, 3.5 लाख का आ गया. माय गुडनेस, 280 का, चलो 1.5 का मान लो. आप बताओ इतना खर्चा करने के बाद वो कहां से लाएगा, राइट. मध्य प्रदेश पुलिस ने और नेक्स्ट डे क्या हुआ, छोड़ दिया. हाँ उनको हाँ आना पड़ता है, यू हैव टू गो बिफोर दिया. अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया दे हैव टू क्लोज एफआईआर, वो पूरा प्रोसेस लेगा. चलो तो ई गवर्नेंस समझ में आया, ठीक है. नाउ देयर इज अ called national e-governance plan that we'll talk about tomorrow. आज नहीं, national e-governance plan called NEGP. Basically national e-governance plan came in 2006, right, and the objective was to promote the quality of public services, right. And there are 27 missions that has been taken up by the government to make the system electronically. For example, health, education, right, post office, so on and so forth. आज नहीं करूंगा बात, कुछ को सवाल है तो पूछो. If you have any query, then ask question. I'll talk about NEGP. अभी चल रहा है NEGP 2.0, ये 2015 से चल रहा है, राइट. इसके बाद लेट मी एक चीज मैं बता रहा हूं, मुझे याद दिलाना. बिफोर आई टीच यू सिटीजन चार्टर, एक दिन मुझसे उससे पहले मुझे याद कराइएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के बारे में बात करना है. फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, artificial intelligence. Yeah, I'll talk about it. How this new technology or the fourth revolution, the fourth industrial revolution has brought changes in governance. Yeah, fourth industrial revolution.
right? The revolution which is being brought up by the information technology, that is called fourth revolution. And what kind of changes it brought in governance, तो थोड़ा एक दिन बात कर लेंगे, that is very important. Third, don't you think that e-governance can also lead to risk to confidentiality and integrity of user, and it is a more common to attacks and unavailability? You know, data protection bill. Abhay, what is data protection bill? Now, the data protection bill is intended to protect the data of the user. Abhay, so you know that the European country has data protection act, but India don't have. Right? So data protection bill is being framed in order to protect the user's data, the identity. You are right that, you know, the e-governance has of course made us some threat. So know that there are many uses of e-governance. जो मैंने वो दिया है योजना, कितने आधे घंटे लगा लेना, ज्यादा लगाना, आधे घंटे में you read आधा या एक घंटा, only 1.5 hours or half an hour you can give. So still there are many vulnerability in system always which can be exploited. ये तो है, you know, everything is not without risk. Risk is always there. Abhay, huh? Yeah, it leads to unemployment. I don't think this is an old thinking, Amber, that technology lead to the unemployment. For example, मान लो आप लोगों को नदी में घुसा दिया जाए और बोला जाए कि मछली पकड़ो हाथ से, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, राइट? सो इट विल गिव मोर एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब आप जाल न फेंको. It is a very old thinking that technology, you know, replaces, you know, human being. It leads to unemployment, right? Basically, it transforms things, life, basically, right? और पायलट की वजह से बहुत सारे जॉब है ना. We'll talk about. So I'll stop here today. See you tomorrow, right? National e-governance plan, right? And then I'll talk about mobile governance.